अभी पता चलेगा, अभी रिलीज़ हुई है. I think it's definitely something I'm very very proud of. Work I'll always be proud of. Show I'll always be proud of. I think it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think you know to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. सच कहूँ तो आज आ रहा है आप सब लोग को देखकर और आप लोग के रिएक्शन जो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग क्योंकि कैमरा हाथ में है तो इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं शायद प्यार इतना व्यक्त नहीं कर पा रहे बट आई फील कि हाँ ये ऐसा कहे तो पर्दे की साइज पे लिमिटेड ये कहानी नहीं थी और ये परफॉर्मेंस नहीं है ये कोई भी पर्दे की साइज दो आप इंचेस हो या 70 mm हो या कोई भी हो दे आर गोना टेल द स्टोरी विद द सेम पैशन एंड फायर एंड दैट्स द थिंग अबाउट द टीम सो आज बिल्कुल आ रहा है ये फीलिंग कि हाँ काश ये ऐसा कुछ करें हॉटस्टार के भी कुछ लोग हैं और ये सुन रहे हैं हमारी बातें तो क्या पता कुछ दिनों में ऐसा भी अनाउंस करें आप लोग को और एक बार बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि चलो इसको बड़े पर्दे पे भी देखते हैं. No, why not? Yeah, but it's been Karthik and Fatima, is it? Yeah. Yeah, no, for sure. I mean, when I first heard of it, I think people asked me if I wanted to be a part of it, but the second part I took a long swim, at the end of the film. So I don't think that character can return for a sequel. I think the team that they're putting together, from whatever I'm hearing, is a great team, and I'm really looking forward as a film watcher to see what they do with the next part. I'm sure they'll do a great job. Yeah. Actually, the word battle is very strong. Sure, I grew up thinking that okay, maybe I'm not the coolest kid on the block, and that's okay. I don't think it's so much a oh, I was struggling with it or I was battling confidence issues. I don't think it was so steep. But I guess sometimes some of the things you say, they come out in print sounding way more aggressive. Sure, I was nerdy and I was very geeky kid. So for me, I just didn't think that I would naturally belong in this world because it was just so fantastical. But through the course of my career, 7 years, like you mentioned, I've had the chance to play a variety of parts. Some pretty looking characters, some not, and I think so much is also about connecting with their conflict. When you understand what they're struggling with or what the character is really dealing with, what are her circumstances, and you focus on that, there's a certain authenticity that comes in. And whatever, and I think I've not always played parts that are supposedly good looking or whatever. And confidence, I think, is not a destination. It's a journey. On some days you feel great. On some days you feel a bit low. Some days I feel like my merit has been validated by some bright minds like you guys, and I feel great. And on some days I'm like, shit, my life is over. I think it's okay. It's a journey. I'm very fortunate that filmmakers put their faith in me and they give me parts that are as glamorous, as intense. It's really a pleasure. I am not burdened by it. This has really been a privilege. ये मंच जो है नाइट मैनेजर के लिए तो ये इस पे आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन तो मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में तो कम से कम 60 साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना ये सिलसिला तो चलता है काफ़ी सालों से चल रहा है तो कभी एक पैच आता है जब 2 साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है ये प्रॉब्लम हो रहा है ये कम से कम मैं ही अपने करियर में 5-6 बार देख चुका हूँ और ऐसा कभी होता नहीं है ना होगा ये जैसे हर इंसान के लाइफ में होता है उतार चढ़ाव बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा एंड तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने
समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं, और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी, क्योंकि आदमी हर ज़्यादा सीखता है, जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो फिर ही हैज़ टू पे अ प्राइस. बट आई थिंक पीपल हु आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क एंड हु नो देयर जॉब, हु नो देयर क्राफ्ट, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी, और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी, और आपने देखा और आप देखते रहेंगे.